extremely privileged and honored. We are feeling extremely privileged and honored to have with us Mr. Anmol Sagar, an IAS officer of 2019 batch and who had done his graduation from Kirori Mal College itself. I welcome you, sir, on behalf of Kartavya. Thank you so much for having me here. Rashmi, is it? Thank you, Yes, sir. Rashmi, for having me here. Thank you, Kartavya Society, for having me here. It's a great feeling to be back at the college, though virtually, but it feels nice. Thank you, sir. And it is to inform you all that we are going to record this session with the due consent of the guest speaker. So my request is to all to please keep yourself on mute until asked to unmute to avoid any distraction. So without any further delay, now I would like to invite Neeraj and Mohammad Soyab, coordinators of today's session, to please start the event. Thank you, Rashmiti. Life is full of experiences, and experiences are a vital source of knowledge and that show a path towards wisdom and helps us to pursue our dreams in reality. In the same way, to enrich such experiences among future bureaucrats, Kartavya, the Civil Services Society of Kirori Mal College, University of Delhi, brings all civil aspirants across KMC under one umbrella and provides an opportunity to inspire, share, and learn more. Good morning to all. Namaskar. First of all, to all the respected teachers who are present over here, a happy Teachers' Day. I am Neeraj, along with my co-host Mohammad Soyab, Executive Council members of Kartavya, welcome you all with a warm heart for an interactive session organized by Kartavya, the Civil Service Society of Kirori Mal College, on the topic Mission KMC to Bureaucracy with Mr. Anmol Sagar sir, an IAS officer, to have as a speaker to have a glance how Sir has spelled his name on UPSC result and his journey from a Kirorian to an IAS officer. As I quoted earlier, being an epitome of responsibility, as per its name, Kartavya, with these sessions, wishes to dawn the experiences of civil services officer about thick and thin in their UPSC journey, a balanced approach in the college life along with UPSC preparation, and even what civil services demand in reality, which in turn gives us a scope to check our goal alignment with the actual requirements of our goal from paper to reality. Not to waste much time, let us carry forward this session. I request my co-host Mohammad Soyab to introduce the guest speaker of the day. Over to you, Soyab. Okay. Thank you, Neeraj. I'm feeling extremely privileged and honored to introduce our chief speaker and IS officer, Mr. Anmol Sagar sir. And I'm proud to say that he is an alumni of our college and pursued geography honors from here. In 2018, he cleared Civil Services Examination, India's one of the toughest examination, and secured All India rank 414 and became an IS officer at the age of 23 and made his dream into reality. He has a work experience as a chief officer, Nagar Parishad Kannad, Aurangabad district of Maharashtra, as a part of his district training. With a motive to serve the nation, he recently took charge as an assistant collector, Gondia district and project officer of ITDP, Deori. Really pleased to have you, sir, today with us. Now, I would like to invite Anmol, sir, to share about his college life and his UPSC journey. Before that, I would request all the audience to switch on their cameras. It should more interactive. And if possible, if you have any query related to the topic, you can either type your name in the chat box or query, and that would be addressed later. Now, over to you, sir. Now the platform is yours. Thank you, Shoaib, and thank you, Neeraj. I need to talk about two things and in continuum apparently. Firstly, पहली बात, what should be the language of the discourse? Should it be English, Hindi, bilingual, or only Hindi? Just please let me know. So Sir, then you I'll can. talk accordingly. Sir, you can be bilingual. Chalo, good. Okay, fine. Right. So KMC. So I entered KMC in 2013. That was a while ago now. So it just makes me feel old also. That's very bad.
बट ओके, सो 2013 के अंदर एडमिशन हुआ मेरा, एंड आई वांटेड टू गेट इनटू ज्योग्राफी ऑनर्स। ऐसी बात नहीं थी कि जस्ट बाय चांस ज्योग्राफी लिया। आई वांटेड टू गेट इनटू ज्योग्राफी ऑनर्स, एंड it was a good batch in 2013. We are the FIUP batch, जैसे बोलते थे। वी वर दी फर्स्ट FIUP एंड द लास्ट FIUP बैच जो था, तो हम ही थे। तो एक साल चला, उसके बाद नहीं चला FIUP, जो भी रीजन था। इट वाज गुड, आई मेड गुड फ्रेंड्स। आई वाज मेजरली माय फ्रेंड्स वर फ्रॉम द सीनियर ईयर्स। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट, आई वाज फ्रेंड्स विद सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सो मेरे अपने बैचमेट्स पे इतनी दोस्ती नहीं थी उस टाइम, बट लास्ट में आते आते दोस्ती बन गई थी, वो अच्छा था। आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ मोन्टाज। आई डोंट नो अगर वो सोसाइटी अभी भी है, फिल्म सोसाइटी जो है, मोन्टाज में था मैं। सर थे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के। Someone has just texted me that sir, please speak in English only. So is it supposed to be in English only? Just please let me know. No, sir, you can be bilingual. We have students from Hindi medium also. You can be bilingual, no problem. All right, all right, all right, all right. So uh, I was in film society of montage, and Shibu sir was there from economics honors at that point of time. So we had a great fun. So टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज के अंदर तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था मैं। मतलब जैसे सब लोग, आप लोग भी होते हैं, तो ऐसा कोई बहुत पढ़ाकू किस्म का तो नहीं था, और मेरी अटेंडेंस भी काफी कम थी। सो आई डोंट नो इफ आई एम सपोज टू से दिस और नॉट, बट यस, दैट वाज द फैक्ट। इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने पढ़ाई में कॉलेज में। तो माय ओनली एम वाज टू जस्ट टू एंजॉय द कॉलेज लाइफ। जैसे आप लोग जाते होंगे यहाँ पे कमला मार्केट वगैरह और आसपास का हडसन वगैरह, वही मैं भी वही करता था। पीजी में पढ़े रहते थे, मजे मारते थे, जब मन करता था चले जाते थे। सो था, पर मार्क्स सबके आ ही जाते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील इन कॉलेज। रात लास्ट मोमेंट में रट्टा मार के सब कुछ पास हो जाता है, बट ठीक है। बट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, आई वुड से। बैलेंस ऑफ बोथ इज इम्पोर्टेंट, सो आई ensured दैट आई वाज पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आई वाज पार्ट ऑफ जो भी अपना फ्रेंड सर्कल होता है, उसके अंदर भी मजे जो मार रहे होते हैं वो भी किया। उसके बाद पढ़ाई तो करनी थी, उतनी थोड़ी बहुत भी की। बट to be very honest, my goal was certain that I never wanted to get into academics. मुझे प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लाइन में नहीं जाना था, मेरे को यूपीएससी ही करना था। तो आई वाज वेरी सर्टेन, दैट इज द रीजन व्हाई आई डिड नॉट इवन अप्लाई फॉर एमए। दो जो हमारे मेरे मार्क्स थे, उसके बेसिस पे मेरे को डीएससी के अंदर एडमिशन हो जाता एज पर द मार्क्स। बट नहीं, आई नेवर वांटेड, आई नेवर सैट फॉर एनी एंट्रेंस फॉर जेएनयू और डीएससी और जामिया और एनी अदर फॉर दैट मैटर। So straight out of college, ये attempt दिया, उसके बाद हो गया। That I'll talk to you guys about a little later. तो college, in if I sum up, first 2.5 years of out of 3 years, first 2.5 years was just मजे मारना, nothing else। पढ़ाई लास्ट की जो लास्ट के एक आध 6 महीने के आसपास, जब आपका कॉलेज जा रहा होता है, you will, I don't know how many of you are in third year right now, but थर्ड ईयर में आते आते, no matter how much you hate your college, you start loving it। सर एकदम से अचानक से, तो यू स्टार्ट मिसिंग इट, थोड़े इमोशनल और सेंटिमेंटल हो जाते हैं। So that was the case with me also, and at that point of time मैंने थोड़ा थोड़ा यूपीएससी का देखना स्टार्ट कर दिया था कि भाई क्या होता क्या है, क्या एनसीईआरटी होती है, और क्या लक्ष्मीकांत होता है, जो those books which you get to hear about when you're studying for UPSC. So I started to know about it थोड़ा बहुत। मेरे कुछ सीनियर्स थे उस टाइम जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके थे, तो मैं उनके टच में रहता था कि भाई भाई बताओ भैया क्या पढ़ा था आपने, ये बताओ। एंड वो अभी भी मेरे टच में है। ही इज स्टिल प्रिपेयरिंग, ही इज बीन अ वेरी गुड गाइड टू मी। he was my senior from same like geography honors में ही थे वो मेरे senior। तो he used to tell me कि ये पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ना, वो पढ़ना, ये पढ़ना। तो I was like okay। तो थोड़े जितने भी इंफॉर्मेशन था जो उस लेवल पे हो सकता था, वो सब मैंने किया था। Not too much into UPSC because that was not possible, or फिर that I was not also in that time frame and mind frame to study। So college was the first priority because final year तक बैक आ जाती तो एक साल बाद आना पड़ता, तो कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए वो भी था कि कॉलेज में भी पास करना है, वो ऑटोमेटिकली पास हो ही गया, नो डाउट। एंड बट हाँ, कॉलेज जैसे पास आउट किया, उसके बाद आई डाइव्ड इनटू UPSC preparation, and there was no looking back after it। So since Kartavya is a society dedicated to civil services, I believe it will be more interested in listening to the things related to civil services rather than college life, because college में तो आप सभी हैं और खुद ही enjoy कर रहे हैं। तो मैं कॉलेज लाइफ के बारे में बताऊंगा, then I'll be like I'll not be a very good guest। So उसके बाद I dived into UPSC, and that this was what 2016 का towards the end, because मैंने 2017 में पहला अटेम्प्ट दिया था CSE 2017। तो उसके लिए
लाइक एवरीवन आई वाज अ वेरी नाइव, जैसे होता है ना बहुत ही नौसिखे टाइप आदमी से स्टार्ट करते हैं सब लोग, फिर थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट्स हाउ आई वाज। सो आई स्टडीड, आई स्टार्टेड द एजुकेशन, आई स्टार्टेड एवरीथिंग व्हाट वाज रिक्वायर्ड, जॉइन कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, सब कुछ ज्वाइन कर लिया, और ढंग से पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा, और प्रीलिम्स और सीसैट और जीएस के दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स, यू गाइस माइट बी अवेयर अबाउट, तो दोनों में मैं फेल हुआ था। तो नॉट लाइक आई टेल दिस इन एवरी इंटरव्यू, और सी सेट तो तब भी क्वालिफाइंग होता है, तो मैं तो दोनों में फेल हुआ था, जो मैथ्स वाला होता है। तो और बहुत ज्यादा मार्जिन से फेल हुआ था, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड एंड डूइंग एवरीथिंग बाय द बुक। जो टॉपर्स बोलते थे मैंने सब किया था, बट तब भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था एग्जाम। तो मैंने कहा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कि इतने बेवकूफ तो नहीं है हम, अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, नॉर्थ कैंपस में आके पढ़ाई करी है, अच्छा एक्सपोजर था, सब कुछ था, तब भी कैसे हो गया। देन आफ्टर दैट स्ट्रैटेजी चेंज करी, हल्की सी, किताबें चेंज नहीं की, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, दैट डिस्पाइट फेलिंग in no matter how many attempts, please don't change your resources if you're following the right ones. For example, if the एक basic textbooks होती हैं जो सब पढ़ते हैं, अगर उसमें से क्लियर नहीं हुआ तो रीड देम प्रॉपर्ली, डोंट चेंज। फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, दैट डज एंड यू नॉट एबल टू मेक थ्रू मेंस और प्रीलिम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत खराब है, लक्ष्मीकांत इज गुड। इफ यू आर रीडिंग फॉर एग्जांपल लेट्स से स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर और यू नॉट एबल टू सॉल्व हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इट डज नॉट मीन कि आप स्पेक्ट्रम छोड़ दोगे और दूसरी कोई किताब उठा लोगे, आपने कोई मतलब बड़ी मोटी किताबें उठाने लग गए, रामचंद्र गुहा की उठा ली या फिर रोमिला थापर की उठा ली, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शंस। तो चेंज, डोंट चेंज योर रिसोर्सेस, मॉडिफाई द वे यू आर स्टडिंग इट। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट टेक अवे विच ऑल ऑफ यू शुड टेक फ्रॉम मी एज योर सीनियर फ्रॉम द कॉलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या, मेरी जो गलती थी प्रीलिम्स में वो यही थी कि मैंने ना मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, आई नेवर गेव टू मेनी मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, आई गेव लॉट लिटरली 9 mock tests before appearing for prelims and I failed miserably, and before appearing for the second prelims I gave around 40 mock tests including CSAT and ये आपका जीएस। तो कट ऑफ से मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा थे, पर उस टाइम कुछ जनरली कट ऑफ 98 थी, माय कट ऑफ वाज अराउंड, माय मार्क्स वर 108। तो वो बहुत ज्यादा मार्जिन से मैंने क्लियर किया था। इस वजह से मैंने ना कोई बुक चेंज करी, ना मैंने कोचिंग करी, ना मैंने कुछ किया, बस मैंने मॉक टेस्ट दिया था, बस सिर्फ एक स्ट्रैटेजी में चेंज था एंड उसका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल था। So this is what I'm trying to tell you, that it is never the resources. If you're following the right ones, it is your strategy which makes all the difference. So strategy is the most important thing when you're appearing for this examination. Now, since I've already touched upon the topic of strategy, let me elaborate upon it a little more. Strategy का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कभी भी ना प्रीलिम्स मेंस के लिए अलग अलग करके नहीं पढ़ते हैं, यू स्टडी इट इन अ कंटिन्यूम, इन एक फ्लूइडिटी की तरह पढ़ते हैं। तो आप मेंस के लिए पढ़ते हैं, उसमें से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती है। तो आप उठाएंगे, आप तैयारी करेंगे मेंस की, आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ेंगे। Let me give you an example. Let's say, for example, why 1921 is considered to be a threshold in the Indian national movement. ठीक है, these kind of questions will never be asked in prelims, but it will be asked in mains. But if you've read it in that particular point of view, you'll automatically be able to solve questions related to prelims. So this is how you catch up with prelims while studying the mains. और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मेंस के लिए पहले पढ़ो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बीच में गैप ज्यादा नहीं होता है, उसके अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी दैट मच। सो मेंस की प्रिपरेशन एक साल से चलती है और लास्ट के 3 महीने के अंदर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली होती है। सो इफ यू हैव 12 months फॉर एजुकेट लाइक फॉर योर लाइक पढ़ने के लिए, जो आपका 12 महीने, तो उसके अंदर लेट्स से डिवोट 9 months फॉर योर मेंस विच इंक्लूड्स योर ऑप्शनल, एंड लास्ट 3 months स्पेसिफिकली फॉर योर प्रीलिम्स। उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए और फैक्ट्स रिवाइज करिए और ये सब। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटजी। उसके बाद में सेकंड सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो मैं बताऊंगा, वो है डिसिप्लिन। सी, डिसिप्लिन इज सबसे ऊपर, डिसिप्लिन आता है, उससे ऊपर कुछ नहीं आता है व्हेन यू स्टडीइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। मैं आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड हु डिडंट इवन अटेंडेड कॉलेज रेगुलरली। In other words, I was a highly indisciplined college student. And I beg to agree this. I agree this and this is my fault. But that does not, but that you can live by. मतलब हो जाता है उससे करके, बट यूपीएससी में ही नहीं चल सकता, क्योंकि वहां पे 10 लाख लोग दे रहे हैं, वो सब
एक एक मार्क के पीछे जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपकी डिसिप्लिन आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपने सोचा है कि मैं 9 बजे उठूंगा, 10 बजे उठूंगा, तो आप 9 या 10 बजे उठेंगे। अगर आपने सोचा है कि मैंने 2 घंटे का रेस्ट लेना है बीच में, तो आप सिर्फ 2 घंटे का ही रेस्ट लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो सपोज किसी दोस्त ने बोला है कि यार चलो आ जाओ, लेट्स मीट समवेयर, लेट्स गो आउट समवेयर, तो नहीं करना, क्योंकि मेरा मेरा टाइम टेबल रेडी है। मुझे अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, मुझे अपने वीकली टारगेट्स पूरे करने हैं, ईयरली टारगेट्स पूरे करने हैं, मंथली टारगेट्स पूरे करने हैं। So that is the discipline which I'm talking about. That is extremely vital when you're preparing for this examination, and that's what UPSC also expects. UPSC never wants an intelligent student; they want a sincere and a disciplined student. Because intelligent आप की कोई डेफिनेशन ऐसे कुछ एज सच नहीं है, वो आप हो जाते हो टुवर्ड अपनी लाइफ में विद एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। दे वांट अ सिंसियर एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट एंड who's ready to persevere. Talking about perseverance is the third most important thing when it comes to UPSC. परसिवियरेंस का अगर किसी को मतलब नहीं पता, तो उसका मतलब बस ये होता है सिंपल भाषा के अंदर, लगे रहना विदाउट गिविंग अप। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, और मैं प्रीलिम्स में चला गया, तो बट आई डिड नॉट लूज माई हार्ट, आई डिड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, मैं मोटिवेशन मेरी बरकरार रही और मैंने उसी तरीके से मैंने पढ़ाई की, तो मैंने परसिवियर किया। लोगों का 3-3 अटेम्प्ट में, आई नो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, she cleared her exam in the 6th attempt, in her final attempt, and she got a very good rank and very good marks. बट वो परसिवियरेंस ही होती है जो आपको 6 अटेम्प्ट तक, 6 साल की पढ़ाई के बाद ले जाती है। सो ये दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग which you every one of you needs to have, perseverance. So ये तीन चीजें जो होती है, strategy, discipline, perseverance, ये I think these are the important thing which set you apart from the rest of the bulk. जो लोग बल्क है ना, 1 लाख, 10 लाख में से 1 लाख ही लोग अब सीरियस होते हैं, उसके अंदर भी 180 लोग आईएएस बनते हैं, तो सिलेक्शन रेट तो बहुत ही कम है। ठीक है, और उसके अंदर 180 में भी किसी को अपने चॉइस का कार्डर मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो वो भी उसका और करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये तीन चीज अगर आप अपने पास रखेंगे, there is no way that you will not be selected for this examination. हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैंने अपने आसपास देखा है, ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग सेलेक्ट हुए हैं एग्जाम के लिए, हमें लगता है कि ये कैसे सेलेक्ट हो गया, बट वो हमें ऐसा लगता है, बट ऑफ कोर्स उनके पास ये सारी क्वालिटीज होती हैं। दे आर डिसिप्लिन, they are persevering, and they have a right strategy, they have the right set of books, तो वो होता है। So these three things are the most vital things which you guys should have। ठीक है, इसके अलावा हर चीज के अंदर जाने के लिए मेरे को बहुत डिटेल में जाना होगा, तो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर थिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। ये तो मेरा ब्रीफ ओवरव्यू दिया है मैंने, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, यस, कौन है, क्या नाम है? It's a Sahil Hussain. साहिल हुसैन, ओके, यस। Yes, sir. So I would like to know about the strategy. स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा मेरे को एलैबोरेट करके दीजिए क्वेश्चन को, क्या किस चीज के लिए? Sir, yes, sir. Like strategy किस तरीके से build करनी चाहिए ताकि हमेशा permanent रहे. अच्छा, ओके फाइन, देखो ऐसा है कि पहले तो आप क्या करिए कि पहले आप एनसीईआरटीज पढ़िए, सारी सारी पहले बेसिक चीजें कंप्लीट करिए अपना, सारी एनसीईआरटीज पढ़िए, 6 से लेके 12वीं तक बेसिक सब्जेक्ट्स की। एसएसटी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी कर लिया आपने। इंग्लिश साइंस अगर पढ़ना है तो 10वीं की पढ़ लीजिए, एट मैक्स, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपने बेसिक्स कवर कर लिया। उसके बाद बुक लिस्ट होती है, जो बेसिक बुक लिस्ट है आपको किसी भी साइट पे कहीं भी मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब सबको पता भी है कौन कौन सी बुक लिस्ट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, हर सोर्स के लिए एक किताब ही उठाना, बेसिक बुक अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि हिस्ट्री के लिए आपने 10 बुक उठाई है, ज्योग्राफी के लिए 5 उठाई है, इकोनॉमिक्स के लिए 3, नहीं, सबके लिए एक बेसिक बुक उठाइए, जो आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, और कहीं हर सबकी एक एक ही बुक है जो सफाइस कर देती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत मदद होगी। तो ये हो गया बुक लिस्ट, बेसिक्स मैंने कवर कर दिए, बुक लिस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है मैंने आपको ये बताया। तीसरी चीज होती है रिवीजन। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है आपको, 1 2 3 बार रिवीजन तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए होता है, तभी वो आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं,
it is very difficult to retain. So revision is extremely important. ये तीन चीज हो गई. और लास्ट एंड फाइनल थिंग इज योर मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हमेशा देखते रहिए, जिससे आपको समझ आए कि ट्रेंड क्या चल रहा है यूपीएससी का, किस सेक्शन से ज्यादा पूछते हैं और उस सेक्शन से किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं. अगर आप किसी पीसीएस का एग्जाम उठाएंगे देखेंगे पेपर, तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके मेंस के बहुत डिफरेंट होंगे. तो just follow the UPSC का pattern. What is the pattern exactly? What kind of questions and what kind of answers they are expecting, and keep solving mock tests for both prelims and mains. This is the very simple strategy, and please keep it simple. Never complicate your strategy कि मैं आज आधा 3 घंटे ये पढ़ूंगा, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, 3 घंटे नहीं. वीकली टारगेट्स लगाइए कि एक हफ्ते में हिस्ट्री. मैं फॉर एग्जांपल मेरा अपना ऐसा होता था कि मैं एक महीने हर सब्जेक्ट उठाता था. सबका अलग अलग हो सकता है. कोई लोग दिन में 2 उठाते हैं, कोई लोग मंथली 1 पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है. बट सिंपल रखिए और उसके वीकली मंथली टारगेट्स बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए. दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी इज. 1 second for interrupt. I will call the audience one by one. Okay, you can type your name in the chat box. I will call you accordingly. Okay. Now we have a question from Gorang Mittal. Please come forward and ask your question. Gorang Mittal. So, what are your sources for economy, general studies? Economics के I'll suggest you 2 sources. Firstly, of course, your NCRTs. That is an important thing. Then second is your monthly magazines. That economics wala section, which is very vital for examinations point of view. Thirdly, I studied from Vaji Ram's 2 yellow books that they had during my time. Now I have heard that they have only 1 book which compiles both of them. So that Vaji Ram ki yellow book I studied, but I don't. That Sri Ram ki is also, I've heard, is also pretty good. So it depends upon you. So that yellow book is a very good book. उसके अंदर आपके सारे facts और theories उन्होंने compile कर दिए हैं. ये 3 चीज. Apart from that, your daily newspapers and your economic survey for mains and your budget की speech and the budget का जो PIB का summary आता है. These are all your sources for economics. Now you may be thinking कि मैं एक किताब बोल रहा हूँ और ये कितनी सारी चीजें बता रहे हैं. तो this is not the case. Because why? Because newspaper, monthly magazine, budget और economic survey, ये आप economics के लिए नहीं पढ़ते हो, ये आप बाकी चीजों के लिए भी पढ़ते हो. ये 4 चीजें तो ओवर आर्चिंग थिंग होती है जो करंट अफेयर्स का पार्ट होती है. मैंने आपको इसमें बस एक एडिशनल चीज बताई है, वो है आपका इकोनॉमिक्स का येलो बुक जो आपकी बाजीराम की होती है. Okay, sir. Thank you for your elaborative answer. Now, Thank you. Rishabh Raj, please come and ask your question. And please keep your camera on while asking your question. Rishabh Raj. I think he's facing some network issue. After that, Tanishq, please come forward and ask your question. I think he also not available. And now Rimi Kansal, please come forward. Sir, first I want to ask my question also. Sir, with your experience as the assistant director and project officer of ITDP, what are the qualities do you think that civil services demand in reality in a UPSC aspirant? Right. So basically, I have already spent 2 years in the IAS. पहले I was in my probation in Aurangabad where I held 4 different charges एक के बाद एक के बाद एक. I was SDM Tehsildar, BDO, CO Nagar Parishad, and after that I got my regular posting as SDM in Gondia, which is Assistant Collector and Project Officer of Integrated Tribal Development Project. 2 साल की सर्विस के बाद मेरे को ये समझ आता है कि IAS how IAS officers are different from rest of the tribe or rest of the officers which are selected from the civil services. पहला ये है कि firstly you should be rational, extremely rational. You should have the ability to look at the things from both the sides, positives and negatives. That is what is also expected in your answer writings. ये आपको UPSC मांगता है. Secondly, you should be a good decision maker.
IAS officers are known for making quick decisions. For example, there is a riot going on in the city, ठीक है, and तब आप जाके कोड्स और लक्ष्मीकांत नहीं उठाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उठाएंगे कि अच्छा भाई क्या प्रोविजन है क्या है. क्विक डिसीजन मेकिंग इज व्हाट सेपरेट्स आईएएस ऑफिसर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल. कि हाँ, उनको पता है कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस ग्राउंड रियलिटी में ये इंपॉर्टेंट है तो यही होना चाहिए. लोग आपके पास धरने में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, व्हाट इज अ प्रैक्टिकल डिसीजन एंड व्हाट इज नॉट. तो इस तरीके का यू शुड, that quick decision making is the most important thing when it comes to the IAS. And third and most important thing, which I also feel, is the vision. IAS officers will only be there for 2 to 3 years in a particular area, at max 3 or minimum 2, 1.5 2. Udhar they should have a vision. Ki hi, for example, I am in this particular district or in this particular department, so I will establish such systems कि ये long term impact आए इनका, और जब मैं चले भी जाऊं उसके बाद भी ये चीज कंटिन्यू हो. तो ये है आपका जो एक क्वालिटी आपको डिफरेंशिएट करती है, और यही चीज आप अपने आंसर्स में भी लिखते हो, और इसी बेसिस पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं. जो विजन मैं बोल रहा हूँ उसमें आपके, जब आप आंसर राइटिंग में सजेशंस लिखते हो ना, दोज आर योर विजन्स. सो वही आपके मार्क्स दिलाता है. तो जो तीनों चीज मैंने बोली है ना, ये तीनों चीज आपके आंसर्स में भी दिखेंगी अगर आपके पास ये क्वालिटीज है तो. Okay, sir. Thank you very much, sir. Now, that one is Sudhanshu Raju. Please ask your question. Good afternoon, sir. Sorry, I'm not still in the position to open the camera. कोई बात Sir, नहीं. I have two questions which I would like to ask. The first one is related to essay. Sir, I would like to know that how one should start preparing for the essay, because as you know, the essay is quite complicated paper in CSE. And so the second question, as Sir Soy pointed out, that you have done your bachelor in geography and it was also your optional paper. So, sir, I would like to know that how far it became helpful for you. Thank you, sir. These are my two questions. Right. So one first question is regarding essay. So essay in essays preparation does not start before mains. It only starts after mains, because essay does not have any syllabus. Essay will be random. You have to write 2 essays in the paper. एक आपका general studies के topics के होते हैं 5, जिसमें आपको एक लिखना होता है. Second part are more of a philosophical type of essays. ठीक है, तो you have to write 2 essays. ऐसे को लिखने के लिए 2-3 चीजें होती हैं. पहला, आपके पास नॉलेज और कंटेंट होना चाहिए विच यू बिल्ड अप व्हेन यू स्टडी फॉर 1 ईयर. दैट जो आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हो उसका कंटेंट आपका इतना होता है कि दैट यू कैन इजीली राइट. दैट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम. कंटेंट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम. सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिखने के तरीके, द वे यू राइट द एसे. तो ऐसे रिक्वायर्स 2-3 important things. Firstly, it should be written in a paragraph form, not in the points format. There should be continuity in the essay. There should be a flow. कि मतलब ऐसा ना लगे कि 2 पैराग्राफ्स बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. जब आप न्यूज़पेपर्स के कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं तभी हम बोलते हैं ना कि यू रीड द एडिटोरियल्स ऑफ द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. व्हेन यू रीड देम यू विल नेवर फाइंड दैट द 2 आर्टिकल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. इट इज इन अ फ्लो. That is what exactly they are expecting from us. It should be written in a flow. And thirdly, that it should be written in a concise and a crisp manner. कि मतलब आप instead of writing in 2 paragraphs, you can elaborate that line in, let's say, 2 sentences. ठीक है ना. This other thing which is important. And last and the final thing which also separates you from the rest of the other tribe is that it should be creative. For example, कोई quotation से start करता है अपना ऐसे, कोई फिल्मों की स्टोरी से start करता है, कोई अपना let's say कोई कुछ गाने से स्टार्ट करता है. वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है. मैं अपने ऐसे के अंदर क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में लिखता था. मैं फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ ऑफ मैं ऐसे को कनेक्ट कर देता था. मैं कंटिन्यूटी बनाता था. तो वो मेरी क्रिएटिविटी थी. बट अब कुछ लोग किसी इमेजिनरी स्टोरी बना बना के लिख देते हैं ऐसे. तो इस तरीके से क्रिएटिविटी ऑल्सो काउंट्स. आई स्कोर्ड फेयरली गुड. आई स्कोर्ड 130 इन माई ऐसे. तो दिस इज द रीजन कि ये जो क्रिएटिविटी है वो इसी की वजह से आती है, प्रैक्टिस के साथ आती है. बट उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी प्रीलिम्स के बाद. जब आप 4-5 ऐसे लिखोगे यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट. बट ये जो चीजें मैंने बताई, कीप दैट इन माइंड. And as far as your second question is concerned about geography, yeah, it certainly helps because you're not totally unaware about the syllabus. You're familiar with the names, you're familiar with the concepts, you're familiar with the sub-subjects. But at the same time, that is only 20 to 30%. Because UPSC optionals में आने वाले सारे questions
are not only just difficult, but they also require in-depth knowledge, which we tend to forget or ignore when we are studying in the college. Because college में, I don't know, but there is this thing that कितने जितने pages आप भरोगे उतने आपके marks मिल जाएंगे. ये यूपीएससी के अंदर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्टली डोंट हैव द टाइम एंड सेकेंडली डोंट हैव द स्पेस टू राइट द आंसर. So you have to write in the most crisp and the most concise manner, and you should put all the information in those 2.5 or 1.5 page, depending upon the marks. So उसके अंदर though help is only 10 to 20%, and rest of the things are done by your hard work and referring to multiple books, multiple sources. Optional is one thing where you should refer to multiple books and multiple sources. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much. Now, the turn is Envy Bhardwaj. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. I am Envy Bharadwaj from BA Geography Honors, Kirori Mal College, sir. And sir, my question is, you being a geographer, how did it help you in your daily routine or work? And my second question is, what is your suggestion for your juniors in geography department, sir? I'm so sorry, but I did not get your first question. What was your first question? Sir, you being a geographer, how did it help you in your daily routine or work as an Indian administrative officer? Okay. And your second question is, what is the advice that I should give to the fellow geographers studying in the department? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. This is a very, this is the kind of question which has been asked to me for the first time. All right. So, firstly, geography is one subject which is mother of all subjects, as we call it, and it has definitely helped me. I can better appreciate the cropping pattern. I can better appreciate the climate. I can better appreciate the demography. I can better appreciate the urban topography and morphology other than any other person, as compared to any other person, because I've studied them in great detail. When you become collectors, when you are selected into the IAS, when you become municipal commissioners and you become collectors, there's something known as Town Planning Act. You need to study about regional plans, development plans. This is something that we study in great detail, and Bharat must have studied it in great detail when he's studying in the geography department, the regional geography. So it is up to you. Basically, it is up to you. How passionately you have studied the subject and how passionately you want to apply it on the ground and understand things on the ground. And but as a geographer, I really like my subject, and I'm able to appreciate it every now and then. Every small thing I'm able to appreciate it from the geographical point of view. Why tribes are concentrated here, why do I see that the Muslims are living here and Hindus are living there, why do I see that the Dalits and the tribals are living in those shanty scattered settlement. See, these are the things that you understand, you are able to term them when you have studied subjects like geography or social geography for that matter, or population geography. So that is my first that is me answering your first question. I don't know how I've answered it but yes, coming to your second question, all the geographers in the department, first of all, you're in a great college and a very good department. Geography department is a great department in the college. It has the biggest area in the college when it comes to the size of the classroom and the labs, GS1 lab, GL1, GL2 and everything. They have great faculties. Anshu ma'am is there. I know her. She's a great teacher. She has written those NCRTs which you guys study. पहले वहाँ पे खुसरो सर भी होते थे. Now he has gone to JNU. I don't know now he's there or not. Tripathi sir is there, and KK sir is there. Sharma sir is there. So like, there are very good faculty who's present there who have the mastery over subjects. So study, take as much advice from them as possible. But at the same time, by the time you land up in your third year, you should have something in your mind where you're going with it. Either because there are not many career opportunities when it comes to geography. So UPSC, if you want to go to UPSC, you start there, you decide then. Or if you want to get into the academics, you start then, because you have to prepare for both of them. And if you're preparing for academics, the entrance is within your third year. So you have to manage both. So try to, I would say, decide a little earlier when you're studying for that subject or studying in that department. That would be my advice to all the young geographers in the department. Thank you very much, sir. You have answered my question. Thank you, sir. Thank you. Now, one of our senior executive member also want to ask something.
So Ritika, please come and ask your question. Good evening, sir. Sir, there is a plethora of material available for current affairs in market, for example, monthly magazines. But it is very difficult to retain everything. How to revise it and use it effectively in the exam? Right. So the golden rule is follow only one monthly magazine, follow one newspaper, firstly. Secondly, when it comes to newspapers, make notes only of the editorials and not of the news, because those news articles will be covered in your monthly magazine. So just make notes of those editorials in the systematic fashion, like agriculture GS पेपर के हिसाब से बनाना कि फॉर एग्जांपल सारे GS1 के आर्टिकल्स के जो है मेरे जो नोट्स होंगे एक कॉपी में होंगे, पेपर 2 के एक में होंगे, पेपर 3 के एक में होंगे, so that when you're studying for mains you can easily just you know glimpse through them. That is your newspaper. When it comes to monthly magazine, just one monthly magazine, and try to revise them at least thrice before you sit for the exam. I know it is a very humongous task, and एक बार जब हम पढ़ते हैं तो अगले 2 दिन के अंदर गायब हो जाता है सब दिमाग से. I have been there. You will also be there when you study for it, and it is normal, absolutely normal. जितने भी लोग clear करते हैं सब ये कहते हैं. But if you revise 3 times, 2 times, 3 times, 4 times, which you should and you will if you study properly, it will not be an issue. You will be able to retain it. 100% नहीं होता है, वो किसी का भी नहीं होता है, but 50 to 60% आपके दिमाग में रहेगा. But you study to achieve that 100%, then only you land up at 60 to 50%, and that will work. सब क्योंकि सब उतने ही लेवल पे आते हैं, and you will know the gist. अगर आपने 3 बार किसी चीज के बारे में पढ़ा है, कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो अगर आपने 3 बार पढ़ा है तो आप 100% नहीं पढ़ा, बहुत कुछ बता पाओगे. दैट इज अ नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड वंस यू see it, then you'll automatically be able to think about it. So don't worry about that. But yes, one monthly magazine, one newspaper. Thank you, sir. Thank Okay. you. Now the turn is Bhumi. Bhumi, please come. Good morning, sir. Myself, Bhumi Panwal. Sir, I have two questions for you. First one is, what are the challenges faced by you during the preparation for choosing the best coaching and resources and material for studying for current affairs and optional and other GS papers? And the second question I have is, what the examiner sees in an aspirant to be an officer? Thank you. Right. So, coming to your first question first, challenges. First is your monotony. बोर हो जाती हो एक चीज पढ़ पढ़ के, वही दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो. That's a boring kind of a life. But that is also important, right? So monotony is first thing. Which you need to overcome, which you will if you have a good motivation behind you, and if you are following a schedule and a weekly targets. So in order to break monotony, you have weekly targets to keep yourself on toes, so that you don't get bored or bugged up by the daily targets or the daily routine. So monotony is first challenge. Second is time crunch, which is a big issue, because you have a lot to study. There's a huge syllabus, and you're not able to retain things, and the examination is just around the corner. And you just and some enough, because you need to sleep also, you need to take adequate rest also, you need to eat also. तो ये सब करने के लिए और probably बीच में आधे घंटे बाहर आप वॉक हो गया. तो इसलिए तो टाइम क्रंच एक बहुत बड़ा इशू होता है, जो आप अपने टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी से मिनिमाइज और ऊपर नीचे आप करते हो. सो मोनोटनी इज वन, टाइम क्रंच इज वन, एंड other challenges are your demotivation, I would say. That कभी mock test में अच्छे marks नहीं आए. Sometimes you don't score good marks in mock test. Sometimes you have not passed an attempt. You have failed in prelims. You were just left out of the final cutoff of the interview जो finalist होती है. That is a demotivation. Those are the challenges which you generally face. But demotivation का सबसे best तरीका ये है कि focus only on your work. कहते हैं ना, जो just there's a saying in Bhagavad Gita that karmane vadikaraste ma phaleshu kadacham. So that working on your craft and working only on your work is the most important thing. Leave the rest to the UPSC, यार वो देख लेंगे. अगर आपने अच्छी से मेहनत की है तो वो हो जाएगा. अब रिजल्ट की चिंता छोड़ो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो. That's all I would say. Those are the challenges. And coming to a second question, which is the qualities. So as I told you, being rational, having quick decision making, being a visionary,
So these are the things which they expect you, ठीक है, being मतलब understanding things. So how do examiners check them in your answers? See, if you are rational, you will write the topic in twofold. Suppose किसी कुछ चीज पूछा है, for example demonetization के बारे में question आ गया, so a rational human being तो will write the positives and negatives also, ठीक है, positives and negatives. But positive negative तो journalist भी बोलते हैं, ठीक है, so जो गुड जर्नलिस्ट जो होते हैं तो बोलते हैं, बट उसके बाद व्हाट सेट्स यू अपार्ट, व्हाट मेक्स यू एन आईएएस ऑफिसर, आप सजेशंस लिखोगे. So as a bureaucrat or as a civil servant, you're supposed to give suggestions and solutions. You are there to solve the problem. So you will write suggestions. उस suggestions के अंदर they'll see how visionary you are. ठीक है, कितना अच्छे आप solutions देख पा रहे हो, कितने practical solutions दे पा रहे हो. ऐसे नहीं कि मतलब हम ये कर देंगे वो कर देंगे. It should be practical, it should be doable, which should be knowledgeable, ठीक है, जो relevant हो. So that is also checked through your answers. आपका vision और आपका practical thinking is also checked right there. ठीक है, और आपका डिसीजन मेकिंग, एथिक्स के पेपर में आपकी डिसीजन मेकिंग काफी चेक होती है जब आपकी केस स्टडीज आती है. तो दैट इज हाउ योर डिसीजन मेकिंग इज चेक्ड, एंड दीज क्वालिटीज आर फर्दर एम्पलीफाइड एंड फर्दर चेक्ड इन योर इंटरव्यू, वेयर दे आस्क यू क्वेश्चंस. उधर आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी भी चेक हो जाती है, द वे यू आर आंसरिंग एंड वे यू आर डिनाइंग थिंग्स. तो ये सब चीजें ना आपके आपके प्रॉपर कोर्स में ही आपके सब कुछ चेक हो जाता है. व्हेन यू रीड दोस थिंग्स ना, एथिक्स का जब सिलेबस आप पढ़ते हो तो क्वालिटीज मेंशन है ना वहाँ पे, इम्पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी, एम्पैथी, वो सब चीजें आप ऑटो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दोस थिंग्स आर, देन यू उसी पर्सपेक्टिव से आंसर लिखोगे ना, तो यू दोस आर द थिंग्स दैट दे वांट, नथिंग एल्स. They don't want good writers. Some बोलते हैं ना आंसर राइटिंग. They don't want good writers, they want करेक्ट राइटर्स, कि मतलब हाँ जो पूछा है उतना समझ लिया, उतना लिख दिया, बहुत है, ठीक है. दैट्स व्हाट दे वांट. एंड द क्वालिटीज व्हिच आई हैव टोल्ड यू, व्हिच आर एक्चुअली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फील्ड के थ्रू बता रहा हूँ कि ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम रैशनली देखें, जल्दी डिसीजन दें, कोई फाइलें अटकाए नहीं, सबको एम्पैथेटिकली देखें. कोई मेरे पास बहुत तरीके के लोग आते हैं मेरे से मिलने रोज, सबकी सुनो, सबके सोल्यूशन निकालो. तो आर द क्वालिटीज व्हिच आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू व्हेन यू गिविंग फॉर द एग्जाम, व्हेन यू सिटिंग फॉर द एग्जाम. So, what are the basic resources and the best institution, and what are the challenges faced during selecting the best resources out of so many resources? See, there is no best institution. सब बोगस है. सब आपकी मेहनत is the best institution, nothing else. As far as resources are concerned, see, there is a book list, but which is also not a golden list. बेसिक बुक उठाइए जो सबसे पॉपुलर बुक्स होती हैं. there's a reason why they are popular. जैसे मैं आपको बताया ना, जैसे मैंने नितिन सिंघानी आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ी, स्पेक्ट्रम मैंने हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत और शंकर आईएएस. फॉर एग्जांपल माय वाइफ नेवर स्टडीड शंकर आईएएस, शी इज इन द आईएफएस. she has never studied Shankar, she studied from I don't know some main 365 से पढ़ा, तो उसने वही पढ़ा, ठीक है. तो उसका she was able to answer everything. तो you need to pick कि मैं ये पढ़ूंगी या ये पढ़ूंगा, ठीक है, अपने हिसाब से आप करेंगे, बट जो आपको सिंपली लगे, जो सिंपल समझने में आए और आपको इजीली अवेलेबल हो, ठीक है. और ये जो मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर यू आर अवेयर अबाउट दीज बुक्स, बिकॉज दीज आर आउट देयर इन द मार्केट, एवरीवन नोज अबाउट देम. बट ध्यान ये रखना है कि डोंट बी मिसगाइडेड, कि मतलब ये नई मार्केट में बुक आ गई है, ये नए आईएएस ने ऐसी बुक लिख दी तो मैं ये ले लेता हूँ या ये ले लेती हूँ, उसका कोई पॉइंट नहीं है. बिकॉज ऐसे तो फिर हर दिन हर महीने नई बुक्स आती हैं. You stick to one book, the books which are most popular, stick to it, revise it multiple times. So there's a good saying in the civil services वाले preparation के groups में, instead of studying 10 books, study one book and revise them 10 times. तो तभी होगा जब आप एक particular books उठाओगे, एक अच्छी book उठाओगे, उसको multiple बार पढ़ोगे. So don't be misguided or demotivated by the plethora of institutions and the resources available. You need only one book per subject to clear the exam. That's it. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, really like your first answer. Are there any more Yes, sir. Yes, questions? sir. I will call the names. I really like your first answer that कर्म करो फल की चिंता मत करो, and in second answer you focus on the consolidation rather than expenditure. Really like, sir. And now please come and ask your question. Good afternoon, sir. Sir, this is Ganesh here. Am I audible, sir? Yes. थोड़ा सा disturbance है, but yes, I can hear you. Hello.
हाँ, yes, now you tell. Sir, I have two questions. That is, how should one choose an optional subject, and how should one be very consistent throughout the preparation for civil services? Right. So selecting option is extremely important because that can make or break your selection. ऑप्शनल के बेसिस पे सेलेक्ट होते हो क्योंकि सबके जीएस में एक जैसे ही मार्क्स आते हैं, चाहे आपका फर्स्ट रैंक हो या लास्ट रैंक हो, ऑलमोस्ट सबके एक जैसे ही आते हैं, बस 10-15 मार्क्स का फर्क होता है। ऑप्शनल वैसे पूरे उसमें इतना ही होता है, बट ऑप्शनल में तो ज्यादा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑप्शनल के अंदर देखो, देयर आर 2 to 3 थिंग्स व्हिच यू नीड टू कंसिडर. I will never tell you which option to take because that is a very personal choice. Firstly, अगर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, that is the prime and the most important thing. Like if you are a geographer or if you're a historian and I tell you to take civil engineering, then there is no point. ठीक है, तो first is your interest. Second is that कि उसके resources easily available है या नहीं है मार्केट में. For example, if you take let's say आपने लैंग्वेज का कोई भी 22 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज उठा ली, तो फिर उसके पीछे आप पढ़ रहे हो, मैथिली उठा ली या कोई संथाली उठा ली, तो उसके रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप या फिर बहुत जैसे इंग्लिश ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं लोग, उसके भी रिसोर्सेज काफी कम मिलते हैं, तो कोचिंग भी काफी कम होती है। आई एम नॉट सेइंग दोस ऑप्शंस आर बैड, बट उसके रिसोर्सेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो उसके रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो, आपका इंटरेस्ट हो, और उसका ट्रेंड क्या चल रहा है यूपीएससी के अंदर, हैज इट स्टैग्नेटेड, और या फिर मतलब उसका मतलब कुछ सिलेक्शन वगैरह हो रहा है या नहीं, बिकॉज सी दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, बट आई वुड से इट्स स्टिल अ गुड इनफ कंसिडरेशन। आई वुड से फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, फॉर मुझे जो मेरे को पर्सनली लगता है कि इट इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव ऑप्शनल, highly competitive because maximum people are opting for geography, और उसके अंदर scoring above 300 is becoming an extremely difficult task right now. बाकी सब्जेक्ट्स में लाइक फॉर एग्जांपल एंथ्रो में, पॉल साइंस में लोग कर रहे हैं 300 से ऊपर, बट इसके अंदर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बिकॉज इट इज स्टैग्नेटिंग अ लिटिल बिट, तो थोड़ा इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। बट other than that, I still know people who still like to take geography. Why? Because उनका इंटरेस्ट उसके अंदर बहुत है। तो ये चीज ऑप्शनल का, ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। योर इंटरेस्ट, योर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, थोड़ा बहुत ट्रेंड देख लो कि क्या चल रहा है यूपीएससी का। So these 3 things you take in mind and keep in mind, then you should be able to select a good option. And I'm sorry, I forgot your second question here, Ganesh. Sir, I said that how should one be very consistent with his approach in studying? See, I'm mentioning it again and again. It is your daily targets and your weekly targets. See, when you have your targets in mind, you'll always be on your toes. मतलब हमेशा आपको ये रहेगा कि यार मैंने 3 चैप्टर का टारगेट बनाया था एक हफ्ते में, मेरे 2 ही पूरे हुए हैं, तो मेरे पास 2 दिन बचे हैं, मुझे करना ही करना है। तो I would say that if you set up daily targets and weekly targets, you'll not only be consistent, but you'll always be on your toes. That is one way of killing demotivation and keeping yourself consistent. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Okay. Now, Alok, ask your question. I think he is not available. Next to Dharmendra Kumar. Please ask your question. I think he is also facing some network issue. After that, Navya Nair. Yes. Good afternoon, sir. My name is Navya. I'm also doing my geography honors from Kirori Mal College. And sir, as you said, all our teachers are there right now in college. Anshu ma'am hai और Arun sir भी है. सारी teachers है sir. So we'll definitely tell them कि हमने आपसे बात की. So sir, my question is, can you please recall your day of interview for us and tell us about what were asked to you and how you tackle those questions? Thank you. Right. Good to hear that, Navya, that everyone is there. Feels great. Interview. Well, it was a very cold morning, Delhi morning. Uh, I don't know. It was I don't know. I don't even remember the date. I think it was 28th Feb or something. My interview date. And I was I was in the first half batch. So basically, your interview is divided into 2 batches. First, forenoon and afternoon. So I was in the forenoon wale batch mein, and in that forenoon also I was in the first amongst the lot. So I was there. I was reading that Hindu of that particular day because उस दिन का पढ़ के जाना थोड़ा ठीक रहता है. So I read that and I
Went inside. I was sitting in on my table. Uh, Uske baad I got to know that my board is B.S. Basti sir's board. If I don't know how many guys know it, but B.S. Basti sir was the former Delhi Police Commissioner. So I went there. I was very confident, extremely confident for my interview, and गया वहाँ पे because without if you're not confident you're killed before the interview. So I was very confident and I went there. There was one of my colleague. She went inside the आपका interview room, and then she was coming out and I was standing outside, and she was not very happy. She was like यार इतना अच्छा नहीं गया. तो मेरे को पहला झटका तो तब लगा कि अरे यार ऐसा क्या पूछ रहे हैं. It was my first interview. I've never given any interviews. I never sat for placements. I've never done anything in my life again before that. तो मैं गया अंदर. बसी साहब बैठे हुए थे वहां पे. बाकी 4 लोग और बैठे थे सर्कल के अंदर. ऐसे वो इन्वायरमेंट ही अलग होता है. बिकॉज दैट इज वन प्लेस वेयर everything counts, and you're just a minute away from getting selected or getting deselected from the service. So गए अंदर वहां पे. तो बस ये साहब पूछते कि ये मेरी पासपोर्ट साइज फोटो मेरे को दिखाते कि ये तुम हो. मैंने कहा हाँ सर मैं ही हूँ. तो कहते दिस इज नॉट यू. मैंने कहा नो सर दिस इज मी. तो कहते नहीं नहीं दिस इज नॉट यू. मैंने कहा नहीं नहीं सर आई एम दिस. तो भी हंसने लग गया. मैं भी हंसने लग गया. सो that was that. Then it went on and on. Then they asked me questions. I answered them. Some of the answers I did not know. I confidently said I confidently said that I don't know. So this went on and on. So सबने आंसर पूछे. लास्ट के अंदर बस्ती सर भी मजे लेने लग गए मेरे. तो मैंने कहा ठीक है सर ले लो मजे. तो बट कोई बात नहीं. अच्छा गया इंटरव्यू. ऑलमोस्ट मोर और लेस ठीक था मेरा. थोड़े कम मार्क्स आए फ्रॉम व्हाट आई फील इट शुड हैव बीन मोर. बट देन ऑफ कोर्स दैट्स इंटरव्यू फॉर यू. इट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल. यू नेवर नो व्हाट इट्स गोइंग टू बी. आई हैव सीन मेनी पीपल सेइंग दैट देयर इंटरव्यू वेंट एक्सट्रीमली वेल एंड उनको इतने अच्छे मार्क्स आते नहीं. एंड सम ऑफ देम हैव वेरी बैड इंटरव्यूज एंड दे गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स. So it is highly unpredictable. It is extremely difficult to prepare for it. We give a lot of mock interviews, but वो इतने handy इतने जितने लाने चाहिए उतने नहीं आते. That experience is extremely nice. मतलब I would say that when you go for your interview, that you should enjoy it completely. That's what I would say. Okay, thank you, sir. Thank you. Due to due to time limitation, we will end this question and answer session. Thank you, sir, for sharing your motivational and inspiring journey and answering our queries in a pragmatic way. Thank you. And even giving us a vision and approach towards UPSC. Sir, before proceeding towards the vote of thanks, Kartavya want to present a small surprise for you. Chandraban Bhaiya, Okay. our society member, will present the surprise for you. Chandraban Bhaiya, you can. All right. Oh, that's very, very precious. Thank you so much, Istavi Banaya. It's so beautiful. Thank you so much.
Thank you, sir. The whole Kartavya team is pleased to have on your stage today. Can I know who has made that presentation? Sir, Deepan. One of our Sorry? executive members. One of our member of Kartavya. Is he present on the right now in the meet? Yes, sir. Wherever you are, thank you so much. It was very beautiful. Thank you so much. Yes, sir, it was me, and thank you so much that you Sorry. liked it. Thank you, Dipali. Thank you so much. Well, actually, to be very honest with you, I think my wife has also joined in on the meet. She's also listening to me very keenly, and she's texting me on my phone right now. Yeah, are we ending this right now, or is there anything else? Sir, vote of thanks is remaining. Now I will proceed further. I would like to request Dr. Akhilesh Bharti sir to come forward and give vote of thanks for the session. Yes, my voice is audible to all. Yes, sir. Yes. Thank you, Neeraj, for inviting me to give the vote of thanks. सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कर्तव्य सिविल सर्विसेज सोसाइटी के प्रेसिडेंट रश्मि ठाकुर और आप सभी इस कर्तव्य सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं, नीरज हैं और सभी जितने भी साथी हैं, इन आयोजकों का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि एक कॉलेज में आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो सभी छात्रों को एक सिविल सर्विसेज के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं और सबको एक मोटिवेशन दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो स्पीकर्स आ रहे हैं यूपीएससी बैकग्राउंड से, और आज मैं अनमोल सागर सर का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि सर ने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से जो एक टाइम निकाल के हमें और हमारे सभी छात्रों को जो दिया है और एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया है और कैसे यूपीएससी की तैयारी की जाए, रिसोर्सेज कितना मैटर करते हैं और कितना मैटर नहीं करते हैं, और क्या मटेरियल हैं जो कि आपको बार बार पढ़ने हैं, कितने टाइम रिवाइज करने हैं, कौन से बुक आपको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़नी है और कौन से करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन सी मैगजीन पढ़नी है। इन सारे टॉपिक पे सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को गाइड किया है, जिसमें हम एक अध्यापक, मैं तो इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट फर्स्ट टाइम कर्तव्य सोसाइटी का पार्ट में बना हूँ और एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के लिए इतना काम कर रहा है। मैं वाकई अपने एक इमिनेंट स्पीकर जो अनमोल सर हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि सर ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन छात्रों के लिए जो बहुत ही लाभकारी है सर ने प्रोवाइड की, और छात्र इससे बहुत इंकरेज हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि और आगे भी उम्मीद करता हूं कि जब भी कॉलेज खुलेगा सर को एक बार हम फिजिकली भी कॉलेज में ज़रूर बुलाएंगे और छात्रों के साथ जो हमारे कर्तव्य सिविल सोसाइटी के छात्र हैं, उसके अलावा हम साइंस बैकग्राउंड के छात्रों को भी इसमें जोड़ना चाहेंगे, ताकि एक वाइडर लेवल पे जो है बच्चों तक एक मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद अनमोल सर, और धन्यवाद सभी कर्तव्य सिविल सर्विसेज सोसाइटी के छात्रों का, और जितने भी ऑडियंस हैं जो इतने ध्यान से सुने और जो बच्चों ने क्वेरी की उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और इसी के साथ सर आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। Thank you so much for having me here, or thank you for that presentation also. Very, very precious and very grateful. Yes, Meg, please. Yeah, before we end the session, I would just like to say something, since that you have mentioned that your wife, like Kanishka ma'am, is also here. So we would really appreciate if she can say something for all of us. Well, you need to ask her. You are the organizer. I already told her, please ask any question if she has any doubt for clearing UPSC.
Ma'am, if you're listening to us, it would be great if you can say 2 lines at least. It would be really appreciated. I don't know if there's anything left to say now, after he said so many things. I just want to ask him one thing. Do you think you can clear the exam again today if you had to? Yeah, definitely. Well, I think then Definitely. that's No, really I don't know I don't know in which attempt, but I will be able to clear it. great. Chalo, good luck to everybody. I hope I hope it was helpful. Good luck. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir. Mohammed Sayab, you can continue. Sayab, you are on mute. Okay. Yes. Now I would like to conclude the session with some beautiful lines. कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों के आगे जाना है तुम्हें. Now Kartavya will be upcoming more such sessions in future. Stay tuned. Okay, bye. Now you all can give the meeting. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you once again, sir, for So having can we end? with us today. Thank you so much. So we can end the session, right? Yeah. Thank you so much, Yes, sir. sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you. And I would request all the core team members to please stay after the session. And Dipali, you can stop the recording now.